let me call Vinay Ji first to have start in English. जय श्री राम. वेलकम एवरीबॉडी. वेलकम टू भारत मार्ग. वेलकम. हमारा साथ जुड़े हुए हैं प्रीति जी और विनय जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट. दोनों के लिए बहुत बहुत स्वागतम. कनाडा से पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं. बहुत बड़ी खबर है आज. खालिस्तानी गैंग एंड क्रेजी ट्रूडो, पीएम कैनेडियन पीएम ट्रूडो, इसके बारे में बात करेंगे हम, क्योंकि जो घटना हो रहा है ये तो कोई अनपढ़ ही कर सकता है. इसका क्या मैं ऐसा क्यों बोलता हूं, मैं इसका आपको पूरा I will give you the whole detail of it, okay, why it is like that, okay, because you have to know what is happening, okay. And also, friends, Indian diplomat, India kicks out the Canadian diplomat, okay, that's a hot news now, okay, and they kick him out. And also the other major news, ये आपको जानना पड़ेगा कि कनाडा, पंजाब में कांग्रेस लीडर को आज खत्म किया गया, ओके, गोली मार के, और उसका जिम्मेदारी कनाडा बेस्ड कैनेडियन खालिस्तानी टेररिस्ट ने लिए. मतलब इधर का माहौल जो है, ये टेररिस्ट को पालना ऐसा हो गया है. मगर after G20, I have this question to both Vinay ji and Preeti ji. Kya after the G20, Canada is getting isolated? Is Justin Trudeau isolating himself and Canada together? Okay, अभी जो भारत के खिलाफ बात करने वाले 4 कंट्रीज हैं, चाइना, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, अगर हो सकता है तो कनाडा, ये चारों ही है. मतलब are they putting themselves in that league? Is my question also going to be. But anyway, before going further, friends, please make sure to like the video, comment on the video, share the video as much as you can. अगर कोई सवाल है तो आप जरूर पूछिएगा कनाडा के बारे में. और and also, friends, please make sure to subscribe the channel. अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा. And also press the notification bell to stay connected. Okay, and फ्रेंड्स, नाउ वी सेंड आउट वन धार्मिक मैसेज. हमारा धार्मिक मैसेज बहुत सारा लैंग्वेजेस में आते हैं. अगर आपको चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप भेजिएगा +1 647 964 4790 पे, एंड गेट अवर धार्मिक मैसेज वन एवरी डे इन अ लैंग्वेज ऑफ योर चॉइस. आपको जो लैंग्वेज में चाहिए उसमें मिलेगा, और यू कैन स्टे कनेक्टेड विद द सनातन. ओके, नाउ लेट मी गो. विनय जी, वेलकम. ये जो G20 में, not only India isolated Trudeau, you just see there was a big article that came up, on Modi ji saying the way out, showing the way out. You would have seen this. This was run by the Toronto Star, as well as Toronto Sun, and as well as other major newspapers. Okay, and he was slammed by the opposition leader for this, and nobody spoke to him. He was not on any of the photo ops. We did the video on it with you, Vinay ji, on it. मतलब अब कैसा देख रहे हैं? This is like a typical drama teacher style, जो अनपढ़ होता है. मैंने G20 से आया, मेरा प्लेन खराब हो गया, इसलिए मेरा मूड खराब हो गया, मैं इंडियन डिप्लोमेट को बाहर भेजता हूं. आप कैसा देखते हैं विनय जी? वेलकम. Yeah, thank you. The fact of the matter is, during the G20 that concluded just about a few days ago in New Delhi, Prime Minister Modi of India actually categorically told Trudeau, Justin Trudeau, in no less words, he kind of told him that you got to get your act together, and you got to do something about the whole Khalistani movement that is kind of has taken off in leaps and bounds. And they've got so much free hand here in Canada that they can go attack Indian High Commission, Indian consulates, Indian temple, like Hindu temples,
targeting Indian people, and so much is going on. There are Indian businesses, Hindu businesses, like people, you know, of that background. Everybody is being targeted. And once again, विनय जी, वो एक और बात भी आपका ध्यान के लिए लेके आना चाहूंगा कि एज पर द इंटरनल इंफॉर्मेशन हमें जो मिला है, हमें बताया गया है कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच बोल रहा था, और भारत से मोदी ने बोला कि तुम्हारा कंट्री में पहले तुम इम्प्लीमेंट करो, तुम तो फ्रीडम रैली पे अटैक किया, सबका पैसा उठाया, उधर जाके पहले इम्प्लीमेंट करो, बाद में. Yeah, I'm coming to that. So Yes, basically, the you know, Modi actually rolled out all the stuff that is being going on in Canada. And you heard that about, you know, a few months ago. We did a show on that actually. A local journalist who was a Hindu was attacked as well in his own office. Like, that's what I mean. Like businesses, temples, anything that is to do with Hindus and Indian background, right? So all that was being attacked, and despite that, and they were doing all kinds of random referendums and stuff like that, and waving Khalistani flags. And one person who was in a Independence Day rally or some rally just about a few months ago, a Khalistani guy attacked him because he was carrying an Indian flag. So lots of things have been happening. So despite that, Trudeau said, like, look, in Canada, we believe in the freedom of expression. So everybody has the right to say things and do things and whatever. So that means that they've been given pretty much a free hand. Like, you know, just about a few weeks ago, there was a rally in Brampton where they carried one of those tableaus, right? They had an image of Indira Gandhi, who was assassinated by her own bodyguards, who are part of the Khalistani terrorist gang. So this has happened, and a lot of things have happened. But he said that they believe in freedom of expression. So freedom of expression can give them all kinds of rights. However, when it comes to what happens in Canada, freedom of expression is completely looked aside, because when the freedom truck protesters grouped up in Ottawa, Trudeau didn't even go to talk to them. He basically imposed an emergency, and that's basically it. So and both not only Trudeau, both Jagmeet Singh and Trudeau. Yeah, you know, Jagmeet Singh and Trudeau. So now, fast forward to today, like yesterday, and just about a week after the G20, this man comes back, and then I think there's a huge ruckus going on within the Khalistani, family, I can call it. And obviously, the Sikhs for Justice guy, Pannu, was actually on the day when G20 was happening in India. He was holding a rally in British Columbia, and he was bad-mouthing the Indian government, Modi government, and Modi himself, and everybody. And he basically called them terrorists. So this is the irony of things, when the entire world congregated in India for the G20. I mean, I wouldn't say entire world, but leaders of one of the biggest nations, most powerful nations of the world, congregated in India and congratulated and commended Modi on and the Indian government on the job that they've done. This man is calling Modi government and Indian government a terrorist. So now he actually, my feeling is he has, I mean, obviously Jagmeet Singh is a Khalistani sympathizer. They must have had a conversation, and Jagmeet Singh must have told Trudeau, hey, listen, you got to do something about this. So that's how they created a story of, you know, our intelligence agencies have some information that Indian government was involved in the killing of Nijjar. Like, you know, come on. Nijjar is an ordinary citizen of Canada. Okay. Like, there are so many killings going on in Canada. Does every killing get investigated? Yeah, I'll come there. Okay. Let me go to Priti Ji. Priti Ji, before coming to you, I will ask you this question. See, I want to show you this video. Okay. So you can see this video of the Khalistani terrorist who was almost claimed he was killed. ये कुत्ता तरह जैसा भाग रहा था, आपको तो पता ही होगा, पन्नू का, right? And ये हिंदूज को बोल रहा है,
ये आदमी हिंदूस को बोल रहा है भाग जाओ हिंदू इंडिया को वापस, ये जो पाकिस्तानी पैसा में जो पाल रहे हैं ये सब, you know. See here what Hindus, you have repudiated your allegiance to. Okay, you know what प्रीति जी ये बोल रहे हैं आपको, मुझे और विनय जी को, देखिएगा इसको, ये देखने वालों को, ये पाकिस्तान में पालने वाले कुत्ते। Canadian Hindus, you have repudiated your allegiance to Canada and Canadian Constitution. Your destination is India. Leave Canada, go to India. Pro-Khalistan Sikhs have always been loyal to Canada. They have always sided with Canada and they have upholded the laws and the Constitution. On October 29th, you know, yeah, they not only were loyal to both for Canada, they were also loyal to British. They were the ones who were polishing the shoes in the World War. Okay, अगर आपको पता होता है ना, you know. But anyway, आपको कैसा लग रहा है? Canadian PM standing with the terrorists now, you know, making a major statement against the good, hard-working Canadian Hindus. आप कैसा देख रहे हैं इसको? Attack on Hindus and India. जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि ये जो स्टेटमेंट दिया है इन्होंने, पन्नू ने, कि कैनेडियन हिंदू छोड़ के चले जाओ, तो क्या वो कोई कनाडा का किंग है? वो ये कनाडा किसी का किंगडम है और किसी ने निकाल दिया? मतलब वो है कौन? वो है कौन कनाडा के लिए? वो तो न तो कनाडा में रहता है, राइट? ही इज नॉट अ सिटीजन ऑफ कनाडा। देन हु इज ही? वो किस राइट पे, मतलब उसको हक क्या है? ये कुत्ता तरह भौंक रहा था अपने जान को बचाने के लिए। हाँ जी, उसे कोई हक नहीं बनता इस तरह से स्टेटमेंट देने का। उसका ये स्टेटमेंट जो है वो इटसेल्फ इज अ प्रूफ कि कैनेडियन गवर्नमेंट कितना सपोर्ट कर रही है उन लोगों को। ये दिखाता है, वरना कोई कोई भी एक बंदा इस तरह से स्टेटमेंट दे ही नहीं सकता। मतलब हाउ कैन यू, व्हाट राइट यू हैव टू डू दैट? Nothing. So completely wrong statement by him. And जो कैनेडियन हिंदूज हैं, अगर कैनेडियन हिंदूज की बात, वो कह रहे हैं कि सिख लोग हैं जो कनाडा के लॉयलिस्ट हैं, तो क्या हिंदू कनाडा के लॉयलिस्ट नहीं है? इतने हिंदुओं को अगर सिटीजनशिप कनाडा ने दी है तो इसलिए दी है कि वो कनाडा के लॉयलिस्ट नहीं है? नहीं, वो कनाडा के लॉयलिस्ट है, इसीलिए इन लोगों को कनाडा ने सिटीजनशिप दी है। तो ये हिंदुओं को नहीं चैलेंज कर रहा है, ये चैलेंज कर रहा है कैनेडियन गवर्नमेंट को कि आपने गलत लोगों को सिटीजनशिप दे दी है। ये बात हुई ना। उसको छोड़िए प्रीति जी, उसको छोड़िए। Okay, talk about this. How do you see the Justin Trudeau never took any action against those who stole, who vandalized the temple, nothing. Now he is standing with the terrorists. Exactly, वो जस्टिन ट्रूडो के लिए ये एक्शन लेना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसकी जो सीटें हैं, आई थिंक he got some 152 seats in the election and he requires 170 seats to form a government. अब गवर्नमेंट बनाने के लिए अगर 170 सीटें उसके पास नहीं है तो वो क्या करेगा? तो 24 सीट वाले एनडीपी को ले आए उसके सपोर्ट में, उसके सपोर्ट से तो उसकी गवर्नमेंट चलती है, तो वो क्या करेगा बेचारा? उसके पास तो कोई ऑप्शन नहीं है। द मोमेंट वो इनके अगेंस्ट एक स्टेटमेंट भी देगा या फिर ये जैसे नचा रहा है वैसे नहीं नाचेगा, तो नेचुरली वो तो उसका सपोर्ट खींच लेंगे और इसकी गवर्नमेंट टूट जाएगी। दैट इज द रीजन। वो क्यों ये कर रहा है? सीधी सीधी बात है, अपनी गवर्नमेंट बचाने के लिए ये सारे ये पंगे वो इंडिया से भी ले रहा है और पूरे वर्ल्ड में अपनी खुद की इमेज खराब कर रहा है। और कर क्या रहा है ये करके? आपको क्या लगता है कि कनाडा की कोई बहुत बड़ी अच्छी इमेज होगी? उसने अगर इंडियन कमिश्नर को यहाँ से बोल दिया कि आप इंडिया छोड़ के चले, कनाडा छोड़ के चले जाओ, तो उसमें कौन सा तीर मार लिया? उसके जवाब इंडिया ने भी भेज दिया उसके जो डेलीगेट्स है उसको वापस। तो Absolutely. क्या पाया ये करके? Absolutely. विनय जी, I have a question for you. ये क्या ये जो कनाडा है टेररिस्टों का अड्डा होता है क्या?
In fact, I will recommend the viewers. Tomorrow we have a very important program at the same time, friends. ये होगा Canadian schools कौन सा threat के अंदर है. ये कैनेडियन स्कूल्स के बारे में बातचीत होगा कल यही टाइम पे. मैं आपको दर्शकों को बोलूंगा जरूर देखने वाला वीडियो है, आप उसमें जुड़ें. मगर हाउ डू यू सी दिस विनय जी, बिकमिंग द hotbed for terrorism, like Pakistan, like China, like whatever the other rogue countries are? The you got to understand the main conspiracy behind this. Okay, and I'm going back to 1982. Okay, in 1982, Pierre Trudeau, that is Justin Trudeau's father, was the Prime Minister of Canada. Okay, and Indian government at the time warned him that Babbar Khalsa, a terrorist organization that is affiliated with Khalistani movement, was extremely active in Canada, and for Pierre Trudeau to take some action against them and do something. Pierre Trudeau said, "Oh, no, it's nothing. Canada is a very peaceful country. We have freedom of expression. Same thing. People can same junk, whatever his junior does." Exactly. So freedom of expression. So we cannot stop anybody. So they have the right to do it. 3 years later, 1985, Air India Kanishka bombing happened. Okay, that was the Canada's biggest terrorist attack. Okay, and most of the people who died in Atlantic Ocean were basically Canadians. Okay, so you got to understand that the main perpetrators were at the time also Khalistan. And the same thing, fast forward, G20, Modi's government, Jaishankar, who's external affairs minister, they warned these guys that you got to do something about it. And this man, instead of doing something against the Khalistanis, he basically said, "Okay, I'm going to expel." Means he stood with the terrorist. Yeah, basically. Yeah, but I need one sentence, 30 seconds answer. विनय जी, ये जो हिंदुओं का वोट है, जो लिबरल्स को जाता है, ओके, वो उसका ऊपर इसका असर कैसा पड़ेगा? No, this is a huge thing, right? Because patriotic people who still consider as Bharat as their motherland. ये कुत्ते हैं, वो पाकिस्तान के, वो दूसरी बात है. I wanted to answer the second part of your first question, and then coming to the the Pakistani influence of this whole thing, right? So what is happening is in 2024, India is going to go for federal elections. Okay, the objective of the opposition, which who call themselves I.N.D.I.A. Okay, they've all come together. About 26 parties, opposition parties, have come together, led by Congress, and somehow Rahul Gandhi, the Congress guy, wants to become the Prime Minister of the Crown Prince, and at any cost. So he's actually corroborating with the enemies of India, who are Pakistanis, Khalistanis, and he's kind of doesn't want to fund these people directly. So he's sending money to somehow the Pakistani elements, and Pakistani government is actually, including ISI, is actually funding the Khalistanis. Okay, so there's a huge nexus there. And now he's going around different parts of Europe. He did that in the US a little while ago. So he goes around bad-mouthing India and the Indian government. So this is the whole conspiracy. Okay, so these guys are funded by... let's not go to the Indian politics. Let's stick to Canadian one. Okay, yeah. Now my question is simple to you. 30 seconds, please. I want to move on to Priti Ji. Okay, that is, ये खालिस्तानी वोट तो इनको मिलेगा. Okay, क्योंकि ये इंडिया को बाहर किया, भारत को बाहर किया. Yes. तो अब हिंदुओं को वोट का क्या होगा? वो it's not small also. Yeah, I'll tell you in 30 seconds. So, the most important thing you got to remember is this, the Khalistani attacks against the Hindu temples, the Hindu businesses, and these things have been, it's not happening like today or yesterday. It's been happening for the last
little while, a few months, maybe a few years, right? So it's kind of cascaded now. Bomb And blast in Bombay, Bill. exactly, and these are things that are happening. And now what is going on is, it's come to a point that where the Indian diaspora in living in Canada, right, they have realized that the Hindus, okay, let me call them Hindus of India, and there are even Punjabis Whomever in India. thinks, even many Sikhs for There that are matter, who Sikhs- thinks there are Bharat Sikhs as who their live in motherland. India, I mean, in Canada, who are totally against this Khalistani movement and all that. They're embarrassed actually even to talk about it, because they are identified, the moment they wear a turban, they're identified as a Khalistani, right? So these people obviously have shifted their vote bank, and now you see, just a little while ago, Ipsos poll survey showed Mr. Trudeau's popularity declines, come down to 26%. Okay, and Pierre Poilievre, who is the conservative leader, his popularity has gone to 36%. So that's a huge thing there. So the gap is actually increasing. People are realizing that, and very soon this man has to call the elections. प्रीति जी, आप कैसा देख रहे हैं ये ट्रूडो विथ ऑन द साइड ऑफ द टेररिस्ट? ओके, और मैं इससे आपको एक सवाल भी पूछना चाहूंगा कि every country wants to have a relationship with a growing country. You see here, Canadians, we have done a lot of videos on it. Okay, Canadian home ownership problem. People are on the street, not able to pay mortgage, homeless. Canada is becoming homeless. So many things. ये सबको छोड़ के उसको कैसा फिक्स करना है, इसको छोड़ दिया अपना एक्स ड्रामा टीचर ने, और इसके ऊपर पड़ गया. मतलब, I was hearing ex-ambassador of Canadian ambassador talking about it. He called Trudeau as an ass. He says, this guy I don't know who is giving suggestion, or he is thinking idiotically himself and doing this. That's what he said. I never saw in my experience somebody just so half-heartedly doing things because there is no proof that India was involved. Nothing is there. So, please. Absolutely. बात यही है ना कि देखो, ना इनके पास कोई, अच्छा ये निज्जर का जो हुआ वो जून में हुआ है, जून से आज तक ना उनके पास कोई प्रूफ है, ना उन्होंने कोई इन्वेस्टिगेशन की कोई कड़ियां ऐसे जोड़ के रखी है. जब ये निकाला, जब इंडियन एम्बेसी से हमारे ऑफिशियल को, तब भी उन्होंने यही कहा कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट इंडिया मे हैव बीन इन्वॉल्व्ड, Indian government may have been involved. When you use the word may have been, then on what grounds you are doing this? There is no ground. There is no legal ground for that. So ये तो completely बिल्कुल जैसे कहते हैं, ये अपने दिमाग. अमरजीत सिंह वेरी बोल रहे हैं लाल, ओके, लाल बोल रहे हैं, इनका वोट तो मिल जाएगा. नहीं, देखो एक बात है, वोट की बात अलग है, लेकिन एक कंट्री को सोचना पड़ता है, राइट? एक कंट्री को ये देखना पड़ता है कि हम किसको, अनएम्प्लॉयमेंट, होम ओनरशिप प्रॉब्लम, पीपल ऑन स्ट्रीट. जैसे कनाडा में ही इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं जिसको फेस करने के लिए गवर्नमेंट को एक्सरसाइज करनी चाहिए, उसकी बजाय ये इंडियन गवर्नमेंट को किसी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल कर रहे हैं और किसी चीज के लिए. अच्छा, और अभी आपने एक बताया कि कल इंडिया में किसी कांग्रेसी लीडर को एसेसिनेशन कर दिया है और उसकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कनाडा में कोई ग्रुप उन्होंने ली है. तो कैनेडियन गवर्नमेंट उसके लिए क्या कहती है? नहीं, कुछ नहीं. ये कहेगी कि हमारे देश में किसी के दूसरे के देश में जाके तुम किसी को मार दो और फिर हमारे देश में आके तुम रहो और तुम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो और वो हम चलाएंगे. Canadian terrorists claimed ownership for it. एग्जैक्टली. तो अगर कोई एक ग्रुप है जो कनाडा में बैठा है और कहीं दूसरी कंट्री में किसी को मार के वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, तो ऐसे लोगों को कनाडा अपने यहाँ रखेगा? तो मतलब ये तो क्या हुआ, ये तो खुल्लम खुल्ला है कि दुनिया भर के टेररिस्ट आ जाओ हमारे यहाँ, हम आपको पनाह देंगे. तो मतलब व्हाट दे वांट टू मेक आउट ऑफ कनाडा? अगर वो कह रहे थे, उनके जैसे ट्रूडो के पिताजी ने कहा था कि कनाडा इज अ वेरी पीसफुल कंट्री, सेम थिंग रिपीटेड बाय ट्रूडो दैट इंडिया इज
I mean Canada is a peaceful country और वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ freedom of speech है. आपके यहाँ freedom of speech है, इसका मतलब ये नहीं कि आपके यहाँ नहीं, फ्रीडम ऑफ स्पीच किधर है? किधर है? ये बोलिए, फ्रीडम रैली का बंद किया गया और उनका पैसा लूटा गया. जगमीत सिंह एंड ट्रूडो बोथ. एग्जैक्टली, फ्रीडम ऑफ स्पीच तो वैसे तो है नहीं, एक बात. और दूसरी बात, क्या फ्रीडम ऑफ किलिंग भी है आपके यहाँ? अगर आपके यहाँ कोई ग्रुप है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है इस तरह की किलिंग की, तो इसका मतलब तो ये हो गया कि आपके यहाँ तो फ्रीडम ऑफ किलिंग भी है. तो क्या कहना चाहते हो एज अ गवर्नमेंट, व्हाट आर यू डूइंग? कि कोई ग्रुप आप कैसे ये एक गवर्नमेंट कैसे एक्सेप्ट करती है? ये सबसे बड़ा सवाल है जो मिस्टर ट्रूडो को किसी ने पूछना चाहिए कि आप क्या कहना क्या चाहते हो? दुनिया भर के टेररिस्टों को यहाँ लाके रखोगे? Is that what you want to make a Canada? Okay, absolutely. Just give me a minute. I'll come back. Okay, Vinay ji, your last word, 1 minute. No, I feel that the Canadian government has lost its maturity and diplomacy in things, because there is no true evidence or anything. So basically, Ottawa on Monday said it was actively pursuing credible allegations linking Indian government agents to the murder of 6 separatist leader Hardeep Singh Nijjar. Okay. However, there is no hard and evidence about it. And the thing is, the funny thing is, okay, I'm just going to digress for a quick second. Apotec CEO and his wife were killed a few years ago. And nothing has been done about it. Investigation is going on. Nothing has been done about it. Now, all of a sudden, Nijjar, who is like a nobody, like he's like a nobody in the and see, I want to say something. Okay, yeah. ये हमारा जो इंफॉर्मेशन, इंटरनल इंफॉर्मेशन मिलती है, उसके हिसाब से ये है कि 2 गुरुद्वारा रहे वो उधर. इस गुरुद्वारा का ये प्रेसिडेंट रहा. दोनों में फंड वैकेसी का जो फंड कलेक्शन का प्रॉब्लम रहा, पैसा का प्रॉब्लम था, इसलिए ये गुट ने दूसरा गुट को मारा. This is what I have heard as well. Exactly, you're right. This is the internal information. This is the internal information. That's the word that's going around. That पैसा का प्रॉब्लम था. Yeah, exactly. This is a group that is a group rivalry that has happened between 2 groups, and one group headed by Nijjar and another group headed by somebody else. And he was the president of the Gurudwara. Can you believe that? He was the president of Guru, but doesn't mean that the Canadian government has to escalate this issue and go to an extent of expelling an Indian diplomat. Like, come on, what is going on here? You got they want to. They did do nothing when the ISI killed Karima Baloch. And exactly. And one more thing, like Nijjar को तो Indian government ने वांटेड घोषित किया है और 10 लाख का उसके ऊपर इनाम भी है. राइट? निज्जर को तो, और निज्जर के ऊपर एक और आरोप है. बीएनसी जो पंजाब के सीएम थे, उनकी हत्या में ही इज इन्वॉल्व इन सम वे. सो ये वन ऑफ द अदर थिंग. तो ये तो मोस्ट वांटेड था, राइट? ये बंदा जो, तो इसको आपने पनाह दी, आपने, वही तो मैं कह रही हूँ कि ये मतलब व्हाट एग्जैक्टली कैनेडा इज ट्राइंग टू डू. दोस पीपल, not Canada. Okay, not Canada. Talk about the ex drama teacher, Mr. Trudeau. It's not Canada. You cannot call one man stupidity towards a country. Is my opinion on it. A huge disreputation to the country. Now, my conclusion, I want to say that basically, what, this is going to cause a huge problem between the relationship of 2 countries. Okay. Yes. India and Canada is going to, the relationship is going to go only down, because now that India also expelled a Canadian diplomat, the fight is going to escalate. And how long? Do you think next prime minister will be? My feeling, just hear me out. I mean, my feeling is this is going to probably end up in travel bans and Canadian students not coming to. Indian students not coming to Canada for universities education. वो तो अच्छा होगा, इधर आके इतना गंदा करने के. Many universities in Canada will close down. So this is going to create a huge problem. So I think Trudeau has to wake up and do something about it. If not, it's going to bring a bad reputation to the country.
And there is one more thing I want to say. Last minute, 1 minute, 1 minute आपके लिए. Last word. कैनेडा 2020 करके एक कंपनी है, राइट, और उसको 3 कंपनियां फंडिंग करती हैं. सेंटर फॉर अमेरिकन प्रोग्रेस, उसका हेड है जॉर्ज सोरोस. दूसरी कंपनी है ग्लोबल प्रोग्रेशन ऑफ इनिशिएशन, और तीसरी कंपनी है प्रिसीजन स्ट्रेटेजीज. ये 3 कंपनियां इस कैनेडा 2020 कंपनी को फंडिंग करती है. एंड जस्टिन ट्रूडो इज अ बोर्ड मेंबर ऑफ दैट कंपनी. एंड इमेजिन, जॉर्ज सोरोस इज द फंडर ऑफ दैट कंपनी. सो ये सारा जो है ना, ये जॉर्ज सोरोस का किया जा रहा है. मतलब ये सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ इसका, इन लोगों का बिस्किट तो कोई भी फेंकते हैं. इन लोगों को तो बिस्किट कोई भी फेंकते हैं. हाँ, नहीं, लेकिन ये ट्रिक करने के लिए नहीं. आप देखो ना, जॉर्ज सोरोस के साथ जस्टिन ट्रूडो की तस्वीरें हैं, वो ही इज इन टच विद हिम. तो ये सारा, मतलब ये सिर्फ ये एक तरफा नहीं है, ये चौतरफा हमला है. और ये चौतरफा हमला जो मेन वजह है वो मोदी हटाओ के ही ऊपर है. ये सारी चीजें हो ही इसलिए रही है. Okay. Anyway, thank you very much. Okay, I have one last question. मेरा व्यूअर से सवाल है कि क्या आप प्रीति जी और विनय जी से सहमति हैं? और मेरा ये सवाल है कि one of the most fastest growing country in the world and you snap ties with that country, ये इस देश के लिए भलाई है या बुराई है? क्या जस्टिन ट्रूडो, the ex drama teacher, the PM of Canada today, ये सब वरदान, ये कनाडा के लिए वरदान है या शाप है? आप जरा कमेंट करके बताइएगा. तब तक मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए जय जय श्री राम, जय जय श्री राम. हरे कृष्णा, हरे कृष्णा.